आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं. इट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग स्पिरिट्स. हाउ मेनी ऑफ अस नो? कभी सुने? मॉनिटरिंग स्पिरिट्स यानी ये वो रूहें या तासीरें या आप इन्हें कह लें कि ये फोर्सेस ऑफ डार्कनेस हैं जो निगरानी करती रहती हैं और इनका काम ही सिर्फ ये होता है. They also called as spying spirits, जो believers के लिए basically एक negative चीज है कि क्योंकि ये जो spirits होती हैं ये spy कर रही होती हैं खुदा उनके believers के जो गिर्द ताकि हमें destroy करें. So that's what we are going to learn. So this topic is going to be new for many people. अगर आपने सुना है तो I believe कि you will get to know more. और मैं एक चीज आज सबसे पहले क्लियर करूं, इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी और कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ डॉक्ट्रिन, इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी. इट्स समथिंग व्हाट हैपेंड टू अस, लाइक मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ हुआ था. सो इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी. आई पिक माई वर्ड्स वेरी केयरफुली, सो प्लीज जरा ध्यान से इस पे नोटिस करें. इट्स नॉट अ थियरी, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, ये कोई फलसफा नहीं है, ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, इट्स अ रियलिटी. लेकिन हम एज अ बिलीवर होते हुए हम इस चीज को नहीं जानते. लव्स मॉनिटरिंग या निगरानी है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है मॉनिटरिंग का? मॉनिटर करना किसी को, मॉनिटरिंग निगरानी करना, क्या मतलब इसका है? ताकि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको ना, उसमें नजर हेज ऑफ प्रोटेक्शन को कहते हैं. एक मॉनिटर, एक आपकी निगरानी, निगहबान जो हम कहते हैं. एग्जांपल नहीं, सिर्फ मॉनिटरिंग का क्या मतलब? वॉच करना, प्रोग्रेस को आप मॉनिटर करें, किसी चीज की क्वालिटी को आप मॉनिटर करें, किसी शख्स को आप मॉनिटर करें. जैसे कैमरास होते हैं, सर्वेलेंस, तो हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, उसके मॉनिटरिंग हो रही है, सिर्फ देख रहे हैं. सो क्या है मॉनिटरिंग स्पिरिट्स? क्या है? इट्स जस्ट लाइक सर्वेलेंस कैमरास. दे आर जस्ट वॉचिंग. और जब हम बात करते हैं बिलीवर्स के साथ, तो इनका काम क्या होता है? बिलीवर्स को टू स्टॉप द पर्पस ऑफ गॉड, खुदा उनके प्लान को सैबोटाज करना, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, या हमें एक ऑल्टरनेटिव, एक आप समझ लें कि एक रास्ता दे देना ताकि हम खुदावन के एक्चुअल प्लान से हटकर दूसरी तरफ चल पड़े. राइट? सो दैट्स द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स. मॉनिटरिंग स्पिरिट्स कभी भी आपको आके अटैक नहीं करेंगे. They will never ever. ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है. Their job description is just to monitor you. सिर्फ आपको देखें, सिर्फ आपको सुने. Surveillance. There is a 100% chance, and I can bet on it. अगर हम बिलीवर हैं, अगर हम खुदावंद के लोग हैं, और अगर हम बिलीवर फॉर एन एग्जाम्पल कोई 20-30 सालों से, फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है और हम 20-30 साल हो गए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह में उस लेवल पर प्रोग्रेस नहीं कर पाए जहां तक हमें जाना चाहिए था. देयर इज 100% चांस के मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आर असाइन्ड टू आवर लाइव्स. दीज स्पिरिट्स आर बेसिकली सेंट फ्रॉम हेल. राइट? दीज आर द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, और ये आपके खिलाफ है. लेकिन हम एज अ बिलीवर होते हुए शायद हम इन चीजों को दरगुजर कर देते हैं, या हम इन चीजों को समझते हैं कि ना ये हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने अगर कल्चर में देखें तो कभी आपने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, दीवारों की आंखें होती हैं. राइट? दैट्स व्हाट इट इज. तो अब बात ये है कि अगर हम बिलीवर हैं और हमने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी, और अगर हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए और हम खुदावंद यीशु मसीह में इतने मैच्योर नहीं है, सो देयर इज 100% गारंटी कि हमारी लाइफ के साथ ये स्पिरिट्स असाइन्ड है. हालेलुया चर्च, हालेलुया. लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं ये बात प्रूव करना चाहता हूं कि दिस इज इंडीड, दिस इज अ सर्टेन स्पिरिट्स which are obviously mentioned in the Bible, not as monitoring spirits, लेकिन उनकी traits हम उसके बारे में देखेंगे. और मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि this is indeed a biblical topic, it's not something that I made up. मत्ती उसका 16वां बाब 21 से 23 आयत. इसके बाद कोई शख्स मत्ती उसका दूसरा बाब
8 आयत और 16 आयत को भी निकाल लें। और अगर आप इसी चैप्टर में आप थोड़ा सा पहले देखें तो वहां खुदावंद पतरस को कहते हैं ब्लेस्ड आर यू शमाउन बरयूना, क्योंकि मैं तुझ पे एक गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप। चलो इधर आ रहा है, दैट्स गुड। मैं पढ़ ही देता हूं। पढ़ दे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मुबारक है तू शमाउन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। राइट। सो हम पहले क्या देखते हैं कि पतरस को ब्लेसिंग दी जा रही है और बाद में अचानक ही पतरस कोई ऐसी बात करता है, खुदावंद कहता है, खुदावंद पतरस को कहता है, आए शैतान मुझसे दूर हो। राइट। और उसमें क्या लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू खुदा की बातों की नहीं बल्कि इंसान की बातों, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, क्योंकि उसके बीच में जिस तरह खुदावंद उसे ब्लेस किया, दैट स्पिरिट टुक ओवर है। और जैसे ही उस स्पिरिट ने पतरस को उसे हाईजैक किया, उसकी थॉट्स को, और उसके मुंह से वो वर्ड्स निकल आए, खुदावंद जान गया इधर हो क्या रहा था। पहली बात यह है कि जो मॉनिटरिंग स्पिरिट है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि वो खुदावंद के प्लान को हिंडर करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। तो खुदावंद का प्लान ये था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी निजात का बाइस बने, लेकिन पतरस कहता है कि ये हरगिज ना होने पाए। दैट वाज़न्ट द प्लान ऑफ लॉर्ड। खुदावंद का प्लान ये था कि खुदावंद यीशु मसीह सबके लिए निजात का बाइस बने। राइट। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, ये ट्रेट है। सो दे आर गोइंग टू हिंडर द प्लान ऑफ सैल्वेशन, द प्लान, एनी प्लान ऑफ लॉर्ड जो हमारी जिंदगियों के लिए, वो सैल्वेशन से रिलेटेड हो, जिस मर्जी काम से रिलेटेड हो, दैट विल बी हिंडर्ड। राइट। दूसरा ट्रेट, डिस्ट्रैक्शंस। आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा। राइट। सो दैट्स द थिंग। और यहां से हमें ये चीज पता चलती है कि ऑब्वियसली देयर इज अ स्पिरिट, जिसे ऑब्वियसली बाइबल में नाम नहीं दिया गया, बट देयर इज अ स्पिरिट व्हिच इज अटैच्ड टू सम पर्सन, ताकि वो खुदावंद के प्लान के उसके बरक्स कोई काम करे। तो खुदावंद यीशु मसीह को अपना पर्पस पता था कि खुदावंद यीशु मसीह किस लिए आए हैं, इसलिए जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है, उनकी जो नजर है या जो उनका पर्सपेक्टिव है, दैट इज मोर ह्यूमन बेस्ड, क्योंकि वो इंसानों के लिए, इंसानों को वो साइन की गई है और वो खुदा के पर्पस को दे डू नो, लेकिन वो खुदावंद के पर्पस को आपकी लाइफ में पूरा ही नहीं होने देंगे। दैट्स व्हाट द स्पिरिट डज। जी, मत्ती उसका दूसरा बाब 8 आयत 16वीं आयत और 19 से 21 आयत, पहले 8 और 16 पढ़ दें। अब हम ये देखने लगे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में, जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे, तब से मॉनिटरिंग स्पिरिट्स असाइन कर दी गई थी। और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। राइट। तो क्या है, देयर इज अ मॉनिटरिंग स्पिरिट वर्किंग बिहाइंड अनदर पर्सन, वर्किंग थ्रू अ ह्यूमन। और क्या उसमें लिखा हुआ है कि जाके पहले दरियाफ्त करो एंड देन कम बैक एंड रिपोर्ट मी। सो दैट्स द ट्रेट ऑफ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, क्योंकि ये सिर्फ सर्वेलेंस कर रही होती हैं, ये देख रही होती हैं, एंड देन दे गो बैक टू देयर मास्टर सेटन, एंड देन दे कम बैक विद एन अल्टरनेटिव प्लान फॉर योर लाइफ, ताकि वो उस चीज को एग्जीक्यूट करें। जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की, तो वो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसके सब सरहदों के अंदर गए और उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 वर्ष के या उनसे छोटे थे। उस वक़्त के हिसाब से उसने मजूसियों से तहकीक की थी। राइट। तो क्या किया कि खुदावंद यीशु मसीह के लाइफ के साथ पैदाइश पर ही ये स्पिरिट्स असाइन कर दी गई, खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ के साथ। राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट हु इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड किंग्स ऑफ किंग्स। He go through with all this. Monitoring spirits were there. तो क्या किया हेरोदीस ने कि पहले तो जाके खबर ली और बाद में वो प्लान एग्जीक्यूट किया, क्योंकि खुदावंद का जो प्लान है उसके अगेंस्ट हमेशा काम होता है। लेकिन हम बाइबल में जानते हैं, जिस तरह 19 और 21 अगर आप आयत पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है, जब हेरोदिस मर गया
تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے. بس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا. Right? So, like we all know this story. I don't have to like re-explain. ہم سب جانتے ہیں. لیکن the point here is this کہ جس چیز کا جیسس کو and then یوسف اور مریم کو جس چیز کا سامنا کرنا پڑا, these spirits were there تاکہ خداوند کا جو پلان ہے اسے sabotage کر سکے. Right? لیکن خداوند بھی اس وقت موجود تھا, خداوند کے فرشتے اس وقت موجود تھے. And then they guided Joseph کہ کس وقت کیا کرنا ہے, کس وقت کیسے پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, کیونکہ خداوند وہاں موجود ہے. Right? So these spirits are there and then ہمارے ساتھ خداوند کے فرشتے بھی موجود ہیں. So we have two forces that are waging war against us. Well, there is one which are with us. جو خداوند کی فورسز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن مانیٹرنگ اسپرٹس آر اگینسٹ اس. لوکا 4:13. So in short, these spirits are also after the lives of believers. وہ ہماری لائف کے خلاف ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں مار گرائیں, ہمیں طرح طرح سے نقصان پہنچا سکیں, وہ خداوند کے پلان کو ہمارے خلاف اسے ہنڈر کر سکیں. So these spirits are there. لوکا 4:13. جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا. یسوع گلیل میں خدمت شروع کرتا ہے. 13 ورس پڑھنی 13 آئی تھی, یہ تھی. اچھا, اور متی 4 باب جو ہے اس کے بیچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں, یہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں, اور اسی میں متی 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو خداوند کا پاک روح ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کہاں لے جاتا ہے, بیابان میں لے جاتا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ 40 دنوں کا خداوند یسوع مسیح نے فاقہ کیا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, اور خداوند یسوع مسیح کو ٹیمپٹ کیا گیا, دیکھا گیا. رائٹ, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ 40 دن پورے ہوتے ہیں تو 3 میجر انسیڈنٹس, یا آپ سمجھ لیں کہ جو آزمائشیں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آتی ہیں. رائٹ, so those spirits were actually watching Jesus, what he's doing, he's praying, وہ خداوند یسوع مسیح فاسٹنگ میں, and then they curated a plan. کیونکہ جب انسان ویک ہوتا ہے 40 days کے بعد, اگر ہم روزہ رکھ کے بعد میں آئیں گے تو ہم کیا ہوں گے, we will be feeling weak. Right? ہمارے پاس obviously اب خداوند یسوع مسیح جب بیابان میں ہے, so there is no business, there is no food. Right? So what will happen after 40 days? انسان ہوتے ہوئے ہم ویک ہیں ہر طریقے سے, بٹ our spirit is going to be very much strong. So that's why کہ جو خداوند کا کلام ہے, جب ان spirits کا ہمارے خلاف اٹیک آئے, so the only thing will save you is the word of Lord. اور اگر ہم دیکھیں کہ جو یہ 3 آزمائشیں آتی ہیں اس کے بیچ میں خداوند نے ابلیس کو کس چیز سے شکست دی, خداوند کے کلام سے. Right? So that's how it is. So in other words, let's just come back کہ ہم جہاں پہلے تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی لائف کے ساتھ یہ spirits assign کی گئی ہیں. So do we think we are exempted? No. Do we think we have a certain exemption since we are under grace? No. We are not. اور یہ چیزیں اس وقت میں, I'm talking about 2023 and moving forward, یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ جس طرح خداوند کی آمد نزدیک ہو رہی ہے, خداوند کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. رائٹ, منسٹریز کے لیے, خداوند کا کام کرنے کے لیے, خداوند کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے. And on the other hand side, these spirits are assigned to all the believers تاکہ خداوند کے کام کو ہنڈر کر سکیں. رائٹ, جی میں ایک ایڈ کر لوں ادھر بھائی کے پوائنٹ کے ساتھ ہی. لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع نے کہا پترس کو, جو خداوند کا بیسٹ فرینڈ تھا, کیا کہا, اے شیطان دور ہو. تو اس کا مطلب اس کے اندر شیطان سمایا ہوا تھا. اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بلیورز یا جو خداوند میں ہے وہ پوزیس نہیں ہو سکتے, اپریشن نہیں آ سکتا ان پہ, ہم ڈیمن اٹیک نہیں کر سکتے. دیٹس دا رانگ تھیولوجی. کلام ہمیں سکھا رہا ہے جو خداوند کے ساتھ رہتا تھا ان کو یہ ڈیمنز تنگ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وہ
भाई का कलाम भी इसी Yep. टॉपिक पे है. Let's look in the life of Paul. हम जानते हैं पौलुस रसूल वन ऑफ द बेस्ट रैबाइज में से है और अपोस्टल में से है. तो एक्ट्स 16 चैप्टर 16 to 18 वर्स हम पढ़ेंगे. अमाल उसका 16वां बाब 16 से 18वीं आयत तक. सो वी आर गोइंग टू, हम इन ट्रेड्स को अब सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी लाइफ में इन चीजों का अटैक है बट वी डोंट नो. हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स अटैच है बट वी स्टिल डोंट नो. तो आज हम इन चीजों को वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल दीज थिंग्स टू लाइट ताकि हम इस चीज को देख सकें, समझ सकें कि बेसिकली हमारी लाइफ में चल क्या रहा होता है. कभी कभार देयर आर थिंग्स के जिन्हें शायद हम समझ ही नहीं पाते और कहते हैं यार होया की है, यू नो. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो लेट्स टॉक अबाउट सम मोर ट्रेड्स अबाउट दीज स्पिरिट्स. और हम जो पौलुस रसूल की जिंदगी से रिलेटेड है हम वो भी देखेंगे. अमाल उसका 16वां बाब 16 से 18 है. जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी. गैबदान डिविनेशन को कहते हैं. डिविनेशन की स्पिरिट है जो फ्यूचर और पास्ट ये वो सब कुछ बता सकते हैं. जी प्लीज. वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी. वो पलूस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं. वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही. आहर पलूस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा. वो उसी घड़ी निकल गई. राइट. सो इस पैसेज में हमने क्या चीज देखी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वो लड़की कर क्या रही थी, पौलुस रसूल और उसके जो शागिर्द थे वो वहां से गुजरते थे तो क्या कर रही थी? वो खुशामद कर रही थी. फ्लैटरी. लुक आउट फॉर फ्लैटरी. खुदावन का रूह कभी आपको फ्लैटर नहीं करेगा. राइट. सो दिस इज द फ्लैटरी. राइट. और पहले तो पौलुस ने इग्नोर किया कि अच्छा तू कह रही थे कहती रहे, बट इट वाज कंसिस्टेंट. बहुत दिनों तक इट वाज कंसिस्टेंट. Eventually उन्होंने क्या, you know what, relevance करिए पहले, you know. So, you know, to cut short, हमारी लाइफ में ऐसे दो तरह के लोग आ सकते हैं जो या तो आपको जिसे बटरिंग कहते हैं ना, फ्लैटरी, without knowing you, they will do it, right? They will be like the best person on this earth. On the other hand side, कोई ऐसा शख्स भी होगा जो आपको नहीं जानता but they will hate you. आपसे कराहियत करेंगे without knowing you. मैं बार बार ये कह रहा हूँ without knowing you, बगैर जाने में. जिन्हें आप जानते हो अगर वो आपको हेट करते हैं या आपको लव करते हैं वो एक फर्क बात है क्योंकि आप उन्हें ऑलरेडी जानते हो. That's their nature. But I'm talking about those people who are just came into your life. They don't know you, who you are, from where you came and this and that. But either they will flatter you or they will hate you. Look out for these people. Monitoring spirits are with them. और वो अगर वो आपको कुछ कहने तो obviously those monitoring spirits are talking to you. Those monitoring spirits are basically trying to tell कि either या वो आपको flatter कर रहे होंगे तो या they are putting you down, right? So हमने खुदावन के पाक रूह के साथ चलना है जो कि ना he won't put you down, neither he will flatter you, right? So we need to make sure कि हमें रूहानी तौर पे इतने समझदार होने की जरूरत है कि हमें खुदावंद के पाकरू के ट्रेड्स के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है. तो वो तरफदार नहीं है, सो ही इज नॉट गोना डू एनी फ्लैटरी, राइट. खुद कलाम में लिखा है जैसे इवन कि हमें भी एज बिलीवर्स ये देखना है कि हम जब लोगों को के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कलाम कहता है कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना. इससे जो ज्यादा है वो फ्लैटरिंग में भी आ सकता है. बिल्कुल बिकॉज़ हम बाज़ दूसरे को इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं अगला बंदा भी वो यू नो बिल्कुल. लेकिन तारीफ जो है वो दिल से होनी चाहिए. क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि आप खुशामदी करके उसके लिए बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. ज़बूर में लिखा है. So look out for these people. Not all people who come into your life, they are not going to be friends, right? They're not going to be your friends. So look out for these people. अगर आपकी जिंदगी में लोग आते हैं उन्हें उन्हीं की जगह पे रखे जहां वो ऑलरेडी हैं. Don't invite them. Don't make friends with them.
because you don't know what's come next. You know, पतरस की लाइफ में देखते हैं, लूका उसका 22वां बाब उसकी 31 से 32 आयत। बाप कौन सा? 22वां बाब 31 से 32 आयत। शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे और तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। ठीक है, इस सिंपल पैसेज में बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो हम दोबारा से एक एक वर्स करके चलते हैं। पहले क्या है, खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा शमौन शमौन, इब्लीस ने तुम्हें क्या किया है? मांग लिया है ताकि गेहूं की तरह पटके। ठीक है, गेहूं को देखा है कि कैसे पटकते हैं, जब वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि सिफ्ट यू लाइक वीट। इन अदर वर्ड्स, इब्लीस ने इन सब को मांग लिया, इंक्लूडिंग लेट्स टॉक अबाउट अस। इब्लीस आज भी हमें खुदावंद से मांगता है, सो ही विल शेक द हेल आउट ऑफ अस। दैट्स व्हाट ही वांट्स टू डू, राइट? और वही चीज यहां लिखी हुई है कि तुम्हें गेहूं की तरह पटके। और आगे क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िएगा। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। I have prayed for you, right? क्योंकि जब ये मसला होता है, when these spirits are going to attack, तो the first thing, हम जो under attack आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन हमारा faith that is going to be under attack, right? तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैंने तेरे लिए दुआ की, क्योंकि हम ये वो टाइम है कि जब ऑब्वियसली खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था, और ये तब बात की जा रही है। और उससे पहले अगर देखा जाए तो खुदावंद के जो शागिर्द थे उनमें वो सीरियसनेस का लेवल नहीं था। सो दे डिडंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दे डिडंट नो कि मसीह के बाद क्या आने को है, राइट? और उन्हें कितनी ज्यादा ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए पतरस ने दुआ नहीं की, राइट? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आई हैव प्रेड फॉर यू, ताकि तू अपने ईमान में कायम रह सके। जी आगे पढ़े। और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत कर, राइट? सो जब उस ट्रायल के बाद when we come back to Lord, then gather everyone, right? So हमने ये चीज देख ली कि ये जो स्पिरिट्स हैं दे आर असाइंड टू अस। हमने ऑलरेडी काफी ट्रेट्स देख लिए हैं। एक इनका ट्रेट ये है कि ये हमारे ईमान को शेक करें ताकि हम खुदावन से पीछे हो जाएं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, और हम उन चीजों को देखें कि जिन चीजों पे शायद हमारा दिमाग नहीं भी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें वहां लेकर जाना चाहती हैं। पतरस जी, एक सेकंड मैं तो ये कर लूं। पतरस हम जानते हैं कि ही वॉज वेरी सिंसियर, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहुत सिंसियर था, but yet at the same time he was so much ignorant. Why? So he was sincerely ignorant with the Lord, क्योंकि एक ही साइड पर वो ये समझता था कि वो खुदावन के साथ अगर चल रहा है तो कुछ ठीक है, everything is fine. And on this at the same time he was also thinking कि he is कि वो खुदावन का डिफेंस है, he is the defense for the Lord. खुदावंद उसके लिए डिफेंस नहीं है, वो खुदावंद के लिए डिफेंस है. So that's what sincerely ignorant people means. आजकल हम में से believers, अगर मैं बात करूं, I put myself first, मैं भी कभी कभार sincerely ignorant बन जाता हूं जब मुझे पता होता है कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है, but I still do something which is against the word of Lord. So that's what my sincerity and ignorance come right at the same place, right? So we need to pick one side, कि क्या हम ignorance में चलें या हम obedience में चलें और हम उस sincerity के साथ चलें, but we don't have to be sincere and we don't have to go along with these two things, sincerity and ignorance, right? So हम ये भी जानते हैं कि पतरस जो था he was the most outspoken person. बाकी सब जितने खुदावन के शागिर्द थे, तो खुदावन यीशु मसीह जो कोई गल करदा सी उससे वाले बोल पैंदा सी, हम ये जानते हैं। तो ये उसकी क्या थी, ये उसकी एक नेचर थी, that was his behavior, उसकी एक नेचर थी। Now these spirits were assigned to Peter, right, ताकि उसे मॉनिटर करे। So whatever he is saying, they were actually monitoring.
اور اس کے لیے کاؤنٹر پلان تیار ہو رہا ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں I hate to break this news to you, لیکن ابلیس نے مانگ لیا ہے تم سب کو. Right? So that's what happens. So always look after your words, what we say. Right? If we make big plans, obviously, میں ہمیشہ مطلب بڑے plans بنانے کی کوشش کرتا ہوں, but God has taught me something کہ never ever دعا کرنے سے جب بھی کوئی آپ بات کریں ہمیشہ پہلے سیکیور کریں اپنے آپ کو. رائٹ, کانوں کو آنکھوں کو جو آپ کے خلاف لگے ہوئے انہیں بند کریں, پیرالائز کریں انہیں, and then talk about the things because these things are watching. These things are watching. Let's look in the life of Judas, یہودا اسکریوتی. متی 26واں باب 14 سے 16ویں آیت تک. یہ آپ کا بڑا فیوریٹ ہے یہودا اسکریوتی. 26واں باب 14ویں سے 16ویں آیت تک, 14th to 16th. اس وقت ان 12 میں سے ایک نے جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. موقع ڈھونڈنے لگا. So the monitoring spirits, کیونکہ جوڈس میں اس وقت یہ اسپرٹ آ گئی تھی and he got possessed with that spirit. کیونکہ اگر ہم آگے دیکھیں تو وہ اپنی خودکشی کر لیتا ہے. تو خودکشی بھی جو بیسکلی ہے it's a spirit, right, جو بیسکلی جس کی وجہ سے آپ خودکشی کرتے ہو, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. right, so that's how it is. اور کیا ہوا ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ وہ موقع ڈھونڈنے لگا. So these spirits will look after opportunities. Right? انہیں جہاں موقع ملے گا they will attack. They will attack. Just a year ago, devil had me in the same opportunity and I didn't knew that. لیکن خداوند نے جان بوجھ کے اس میں سے گزارا. So I can teach you today کہ how it happened before. Otherwise مجھے یہ نہیں تھا پتا ہونا, مجھے یہ چیزیں نہیں تھی پتا ہونی. So once devil had you in the perfect opportunity, they are always seeking opportunities, and when they had the perfect opportunity, they're gonna wreak havoc on you. انہوں نے تباہی پھیر دینی ہے, like they will come against you. اور یہ ایسی spirits ہیں, اور like these are very high level kind of spirit. انہیں آپ ریبیوک نہیں کر سکتے. عام طور پہ ہوتا ہے خدا نے کہا نا کہ بدروہوں کو نکالا, اور بدروہوں کا اختیار ہم سب کے پاس ہے, ہم سب نکال سکتے ہیں. رائٹ, یہ خداوند نے اختیار سب کو دیا. لیکن these are real spirits, these are principalities which are against you, and you can't rebuke them. You can't rebuke them. These are principalities. خداوند یسوع مسیح کے نام سے بھی آپ یہ نہیں کر سکتے because they are still spirits. They have some certain powers, right? اور خداوند نے ہی انہیں powers دی ہوئی ہیں. لیکن اس وقت ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایمان میں, دعا میں, پرستش میں, روزہ میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. So to cut short, ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں the amazing thing is this کہ جیسے خداوند یسوع مسیح پہ مسئلہ آیا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا ہے, پطرس اور یہودا اسکریوتی. آپ اگر ان دونوں کی اسٹڈی کریں نا, بالکل یہ لاسٹ چیپٹرز میں جہاں خداوند یسوع مسیح کی کروسیفکشن کی بات کی جائے گی اس کے بعد, تو پطرس اور یہودا اسکریوتی پہ these spirits come. Obviously جو باقی سارے disciples تھے وہ بھی under attack تھے. So the point here is this, these spirits come towards believers تاکہ وہ انہیں گرائیں, انہیں دھمکائیں, انہیں بالکل تباہ و برباد کریں. کیونکہ جب آپ خداوند کے جلال کے لیے, اس کی کنگڈم کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, you will be confronted with these spirits. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ spirits آپ کے سامنے آ کے کھڑی نہ ہو. You are a threat. Yeah. So similarly, جس طرح میں نے کہا ہے کہ I was under a certain opportunity جس کے بیچ میں devil نے کہا امتحان حضرات تھے. Right? The reason is this, I've been watched. میرے words, میری family کی life, each and everything, they have written it up اور they have curated a plan تاکہ اسے میرے خلاف execute کیا جائے. Right? اور کیا ہوا, right after when we bought the house,
میں نے خداوند سے 3-4 کمٹمنٹس کی جس میں سے ایک یہ تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو آبزرو شبات, آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو اسٹارٹ مائی منسٹری تاکہ ہم اس چیز کو کریں, رائٹ. آن ٹاپ آف دیٹ آپ جانتی ہیں جو ادھر اس گھر میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو اس گھر کا وہ جو بڑا کمرہ تھا وہ ہم نے صرف خداوند کے لیے ہم نے وقف کیا تھا. سو دیز ور لائک ویری اسٹریٹ فارورڈ خداوند کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں. اینڈ دین devil always seek opportunity okay, you know what, you have done these things, okay, I'm gonna bring havoc to you now, and I'll see how much you will sustain, right, کتنی دیر تک برداشت کرو گے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ٹیسٹ آتا ہے نا تو خداوند بھی کہتا ہے کہ you know what, okay, let's test them. خداوند بھی کہتا ہے. So in other words, if something comes up in your life جہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, لیفٹ جائیں, رائٹ جائیں, آگے جائیں, پیچھے جائیں, the only thing is your response, that is prayer. Yes. Prayer, worship, fasting, شکر گزاری, that should be our response, right? کیونکہ جس طرح ہم آگے چلتے ہیں, ہم ایوب کی کتاب میں جاتے ہیں اور ایوب کو دیکھتے ہیں. ایوب کی لائف کے ساتھ بھی مانیٹرنگ اسپرٹس اٹیچ کی گئیں. پہلا باب ایوب, اس کا پہلا باب, اس کی 6 سے 11ویں آیت ہم دیکھیں گے. ایوب پہلا باب 6 سے 11ویں آیت. ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں, اور اس کے درمیان شیطان بھی آیا, اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا آیا ہوں. شیطان نے خداوند کو جواب دیا, میں زمین پر ادھر ادھر پھرتا اور کیا لکھا ہے, گھومتا پھرتا سیر کرتا آیا ہوں. That's the another trait. Morning walk. Right? Morning walk. Right? تو یہ traits میں شامل ہے ان spirits کی. اور چونکہ ادھر ابلیس خود آ کر کھڑا ہوا ہے. Okay, you know what good thing about Satan? He doesn't know our thoughts. Yeah. He doesn't know our thoughts. Yes. Only God knows کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے, ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے. Only God knows. But he notices our actions. But he notices our actions. Yes. He notices what we say. آگے پڑھیے گا. ایکشن سے اور بھی چیز ہے نا, جیسے میں کہیں رات کو جا رہا ہوں, میرے اگر دل تیز دھڑک رہا ہے نا تو اس کو یہ سمٹمز پتہ ہے, مجھے فیلنگز نہیں پتہ لیکن وہ سمٹمز دیکھ لے گا, میرے پسینے آ رہی ہے, تو پھر وہ اسپرٹ آف فیئر بھیجتا ہے. I will tell next time کہ how this thing work, how this یہ کیسے پیئرنگ اپ آپس میں کرتی ہیں. ان کی پوری ٹیکنالوجی ہے, ان کی پوری ٹیکنالوجی. These spirits have technology like more advanced than us, you know, more advanced than us. So آگے پڑھیے گا. خداوند نے شیطان سے کہا, کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا, کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں. شیطان نے جواب دیا, کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا اور جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے, تو کیا وہ تیرے منہ سے تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا, دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا. تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا. Right? So پرمیشن. Right? So these spirits can get permission from the Lord. اور خدا جس شخص پہ ٹرسٹ کرتا ہے, and he will always say, you know what, go ahead. They will still stay the way they are. You know, اور ہمیں as a believers, we need to be steadfast with these things, steadfast with the word of Lord, اور خداوند کے ساتھ, تاکہ کل کو خداوند نہ کرے. I will pray for everyone کہ ایسا کوئی مسئلہ نہ آئے کسی کی لائف میں. But if these things come, we should know what is going to be our response. اگر ہم دیکھیں ایوب کی کتاب میں, جب یہ سب کچھ ہوا, اس کے بچے مر گئے, سب کچھ اسے چھین لیا گیا, what was his response?
उसने दिया उसका नाम मुबारक. right? खुदावंद की शुक्रगुजारी, because they are still watching, they are still watching कि हमारी लाइफ में ये मसला आया और हमारा रिस्पॉन्स क्या था. They are recording your response, right? और अगर हम रिस्पॉन्स खुदावंद की ताजीम से करते हैं तो like these spirits will get confused really. They will get confused कि like what's going on, like हमने तो इतना कुछ कर दिया, but they are still worshiping Lord. What is going on, you know? Okay, so let's just talk about, क्योंकि अब वक्त थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, लेकिन before I finish, I'm going to tell you कि how we can identify monitoring spirits if they are in our lives, right? कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने लोगों से सुना है, कुछ बताया गया है, कुछ लोगों से सुना गया है, कुछ मैंने ख्वाब में देखा है, राइट? पर्सनल एक्सपीरियंस जैसा मैंने पहले कहा है. सो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपकी लाइफ में काफ़ी तरह से आ सकती हैं. दे हैव मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. खुदावंद आपको ख्वाब में, रोया में, किसी भी तरीके से खुदावंद आप पर जाहिर कर सकता है. ये खुदावंद की मेहरबानी है. और हमें खास तौर पे जो हमारे ड्रीम्स हैं, they have a very like I would say कि this is one of the best gift if a believer has a dream of as a gift of dream. This is the one of the best gift that you can ever have in your life, right? क्योंकि ये एक ऐसा गिफ्ट है खुदावंद की तरफ से जिसमें खुदावंद आपके जो अगेंस्ट चीजें होती हैं उसे रिवील कर देता है. उसे रिवील कर देता है. Back in 2017, at that time, I just had started having these prophetic dreams, और मुझे नहीं था इनका पता कि इन्हें किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है. I have seen just 2 days before my accident, it was a very fatal accident, लेकिन खुदा ने प्रोटेक्ट किया. I have seen in my dream कि एक वॉर टेबल है, समझ लें जिस तरह ये काउंटर टॉप है, it's just like a war table, it's a big war table, और उसके साइडों पे कुछ ऐसी अजीबो-गरीब तरह की स्पिरिट्स खड़ी हुई हैं and they are planning something against me. I never got frightened with those when I saw that dream. लेकिन मुझे ये ज़रूर होगा कि okay, there is something wrong. जिस तरह मैंने पहले कहा है कि I didn't know how to interpret that dream. After 2 days, I had a very bad accident. और मैं like I was laying flat on the ground जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और बिल्कुल मेरे सर के कोई चंद इंचेस के फर्क से गाड़ी गुजरी. Otherwise it would have been, you know, a disaster. और आज मैं शायद यहाँ बातें ना कर रहा था आपसे. You know, that's what happened. और उस वक्त ही मुझे समझ आई and I have seen the hand of the Lord. और क्या हुआ कि जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, शारून साहब अगेंज पे रहे थे पीछे, I have seen कि जिस तरह सारी गाड़ियों को, बाइक्स को, everything has been just like stopped. और सारे ही लाइन में खड़े थे. मजाल नहीं कि कोई 1 इंच भी आ गया, सब लाइन में खड़े थे. I have seen that. That's the protection. ये बाढ़ है खुदा उनकी, right? So that certain plan got executed against me, right? खुदा ने बचाया, खुदा ने बचाया. So what I'm trying to say, if you have any sort of dream, और first of all कि अगर हमें किसी भी तरह के ड्रीम आते हैं, don't take it for granted. There is a reason behind it, right? अगर कोई ख्वाब आते हैं, there is a reason behind it. We have to pray for that. So अगर आपको कोई ऐसा ड्रीम आता है, ख्वाब आता है जिसके बीच में आप घर को देखते हो without windows or doors, there is a sign कि monitoring spirits are attached to you. अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि दरवाजे यहाँ खुले हुए हैं या बंद हैं या कोई दरार है ख्वाब में, so there is a sign somebody is actually, you know, surveilling you. वो आपके घर के अंदर है. That's the sign. The other thing, अगर आप किसी भी तरह का predatory animal है, जिस तरह बिल्लियाँ होगी, you know, बिल्लियाँ होंगी या किसी भी तरह का like jackal or something like that, if they are staring you in the dreams, there is a total sign that these spirits are against you. Another sign, आप ये अगर देखें कि if somebody is recording you in your dream or watching you or, you know, eavesdropping on you, कि अगर आपको कोई सुन रहा है, that's another sign. अगर आप ये देखें कि आप आंखों को देखें किसी वाटर बॉडी में से निकलते हुए, जिस तरह एक मगरमच्छ होता है, वो उसका मुंह हल्का से ऊपर होता है, उसकी आंखें जो होती हैं पानी से ऊपर होती हैं. So I'm just trying to explain. अगर आप देखें कि आप आंखों को देखें अपने ख्वाब में
right? اور وہ کسی واٹر باڈی میں ہو یا جنرلی ہو, there is 100% chance کہ the monitoring spirits are assigned to you. اگر آپ آؤلس کو دیکھیں, جیکلس کو دیکھیں, کسی بھی طرح کے میرین اینیمل کو دیکھیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ if something is following you, if you see کہ if there's any weird bird جسے آپ نہیں جانتے, if they are following you, there's a sign of monitoring spirit. اگر آپ دیکھیں کسی بھی طرح کے دانتوں کو دیکھیں جو خاص طور پہ جس طرح کینائن دانت ہوتے ہیں نا, بالکل ایسے نوکیلے سے دانت جس طرح ہوتے ہیں, اگر آپ وہ اپنی خوابوں میں دیکھیں, کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ابلیس کیا ہے, شیر ببر کی مانند کیا ہے, رائٹ. تو شیر کے جو دانت ہوتے ہیں چیر پھاڑ کرنے کے لیے, چیر پھاڑ کرنے کے دانت دیکھیں, that's a sign of monitoring spirit. If you have seen a dream کہ جس کے بیچ میں آپ بھاگ رہے ہیں, اور if somebody is following you or something is following you, ضروری نہیں کوئی انسان ہو, کوئی ایسی چیز جسے آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, there is 100% chance these spirits are against you. میں نے تو ساری دیکھی. So, well, it is, yeah. So, میں صرف یہ کہتا ہوں, you need to pray. Just pray. That's the only thing. Because یہ خداوند نے آپ کو دکھا دیا ہے, یہ خداوند نے دکھا دیا ہے, and you know, اس کے علاوہ like I don't have anything. خداوند خود کہتا ہے صرف پرے کریں. ریئل لائف میں یہ تو ڈریمز تھی, ریئل لائف میں بات کرتا ہوں. میں نے پہلے کہا ہے کہ مانیٹرنگ اسپرٹس یہ سرویلنس اسپرٹ ہے, they don't come and fight you, but they can bring havoc if they pair with other spirits or other principalities. تو یہ آپس میں مل کے آپ کے خلاف کر سکتی ہیں. دین کچھ ایسی اسپرٹس جو آفینسو ہیں, جو آپ کے سامنے آ کے وہ جنگ لٹرلی کر سکتی ہیں. دیز اسپرٹس ول ناٹ گو انٹو اینی ایکشن ود یو. ان کا ٹریٹ نہیں ہے, ان کے یہ ٹریٹس میں شامل نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی جو ڈائریکٹ ویژن ہوتی ہے, اور ایک پیریفرل ویژن ہوتی ہے. پیریفرل ویژن کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ جو سائڈ والی ہوتی ہے. پیریفرل جیسے میں دیکھ رہا ادھر ہوں تو مجھے ادھر بھی نظر آ رہا ہے, مطلب مجھے پتا ہے ادھر سے کوئی اٹھے گا, although میں سامنے دیکھ رہا ہوں, تو یہ پیریفرل ویژن ہے. These spirits will operate in your peripheral vision, right? یہ آپ کے سامنے نہیں آتی. They will, you know, operate in the background, in your peripheral vision. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے, اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں نے یہ چیز دیکھی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہو, اکیلے بیٹھے ہوئے ہو, and something just happened and you see that آپ کو ایسے لگا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہلی ہے, but you then see, اور آپ کو سب نارمل لگ رہا ہوتا ہے. There is a sign کہ monitoring spirit ہے. There is a clear cut sign, کیونکہ وہ peripheral vision میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. If you see dark shadows, یا آپ کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہو, and if you can trace a face in that image, لوگ کہتے ہیں کہ it's our imagination. That's right. But in that imagination, there is 100% chance کہ یہ monitoring spirits ہیں, کیونکہ اگر آپ کسی ایک چیز کو دیکھ کر اس میں آپ ایک شکل کو دیکھ سکتے ہو, شکل آپ اپنے دماغ سے کریٹ کر سکتے ہو, there is a chance کہ spirits ادھر ہیں. میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں اسے یہ بتا رہا ہوں. And I have seen, میں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کافی لوگوں سے جنہوں نے ان چیزوں کو اوور کم کیا ہے, and they have said the same thing. So I'm talking about the experience of many people, including mine. کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے, you get feeling that somebody is watching you. You are doing something in your kitchen, or you go somewhere, کسی ایک خاص جگہ پہ جاتے ہو, آپ کا گھر ہو سکتا ہے, یا کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں تب ہو سکتا ہے. And if you have a certain feeling, if you feel like very heavy, you know, like environment, اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ there is somebody is behind you or something like that, یا somebody is watching you, so there is a 100% chance کہ obviously these spirits are there. These spirits are watching you, right? کیونکہ خداوند نے ہمیں heavy. You will feel a little bit burden in your heart, a little bit heaviness. So this is the thing. Another thing, real life examples میں سے میں کہہ رہا ہوں, کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ last minute fails ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار I'm going to achieve this, and right at that time you get failed. You know, آپ کو لگے گا یار I'm going to make this deal, something will happen and somebody stole it. You know, کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو opportunities آتی ہیں, خداوند کی طرف سے آتی ہیں, but if these spirits are with you and we are not strong enough in prayer and fasting,
these opportunities will stolen from you. हमारी आंखों के सामने ये की जाएंगे. And I have seen this. नादिया ने जब जॉब का किया था उस दिन भी वो बता रहे थे तो कैसे जॉब एकदम से वो छीन ली गई थी. And we knew के like she's about to take over that job, लेकिन नहीं थी मिली. So this was the sign कि these spirits are there. So we have to be very sensitive इन चीजों के बारे में. Spiritual level पे any uncommitted area of our life that will be overtaken by these spirit. किसी भी तरह का uncommitted area अगर हमारी लाइफ का है, कोई भी पहलू हमारी लाइफ का है, it will be taken over by these spirits. हमने सुना हुआ है कि नजर लग जाती है, right? That's the real thing. नजर लग जाना, monitoring spirits, right? Evil eye, monitoring spirits. Jealousy, monitoring spirits, right? Now these again, जिस तरह मैंने पहले कहा कि these spirits can merge with other spirits to perform their action, right? But if these things are taking place in your life, so there's 100% chance कि ये चीजें हैं. Financial troubles, हमेशा ये आपको ये certain spirits लेकर आती हैं. जॉब की लाइफ में हम देख लें, यूथ की लाइफ में क्या हुआ था, right? और ये spirits अगर आपको possess करना चाहें, they will offer you good amount of money, just like Judas. अब वो जो millionaire वाली बात कर रहे थे ना, there is a 100% chance like these people are possessed with these things. क्योंकि अगर आप देखें कि जितने भी इस वक्त अमीर लोग हैं, billionaires हैं, right? Amazon, Tesla, name it, Facebook, they write algorithms just to monitor you. आपका फोन बंद भी होगा, your phone is still pinging to the towers. Your phone is still pinging to Wi-Fi and all that. अगर आपका फोन बंद भी है, right? They have designed their spirit. They have designed such algorithms against you. So this technology, although कि इस level पे, लेकिन मैंने पहले बात की कि demons के पास भी technology है. So those people are possessed with this certain thing, this certain monitoring spirits, and they are using that algorithms to monitor you. Surveillance हो रही है. And we can't deny that. Right? So how to deal with the monitoring spirit? इसके बाद this is the part 1, मैं इसे खत्म करूँगा, and we will see the next part next time, क्योंकि again it's a big topic to discuss. So how to deal with the monitoring spirit? Steadfast in your faith, in your prayers, no matter what, right? हम पे एक मसला आता है, हम पे 2 आते हैं, 3 आते हैं, 10 आते हैं, सारी जगहों से आ जाते हैं. Get serious with the Lord. That's the only thing. We can't rebuke these things, we can't overrun these things, but we can ignore these things just by standing still in our faith and steadfast in prayer, right? So that's how it's gonna work. अगर आप मेरे साथ निकालें पहला पतरस 5वां बाब 8वीं से 9वीं आयत, कोई मेरे साथ पढ़ दे. तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले बब्बर शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए. Right? तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं. 9 no, okay. So इधर क्या हुआ है? पहले पतरस को इस चीज के बारे में नहीं था पता. जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था I have prayed for you, क्योंकि अबलीस ने मांग लिया, and then he came to know कि how to deal with this thing. कितना सादा सा ये पैसेज है. कितना सादा सा है और कितनी भेद की बातें उसमें लिखी हैं. Steadfast, resist करो, अबलीस को resist करें, right? That's the most powerful principle to stop monitoring spirits, in order to monitor them, right? अगर आपको monitor कर रही हैं तो उन्हें रोकने के लिए that's the most powerful principle कि खुदावंद के साथ get serious with the Lord, steadfast with the Lord. Just don't be a church goer या सिर्फ हम क्या सके गीत ना गाते रहें, सिर्फ हम चर्च ना जाते रहें या सिर्फ हम बाइबल ना पढ़ते रहें, बल्कि हमारी एक पर्सनल रिलेशनशिप हो, हमारा दुआ करना इस घर को हिला देने का सबब बने, राइट? किसी की जिंदगी को तब्दील कर देने का सबब बने. हमारे गीत महज सिर्फ गीत, म्यूजिक इन चीजों पे ना रहे, बल्कि खुदावंद की जो अनॉइंटिंग है और जो खुदावंद की प्रेजेंस है उसे लाने का सबब बन जाए.
That's what God needs. And that's what we need. ताकि हम इस चीज को resist कर सकें. और जब ये spirits notice करेंगी कि यार इन्होंने तो कोई फर्क ही नहीं पा रहा, they will eventually back off. That's the only thing. They will eventually back off. And they won't come. They won't come against you. हाँ, ये जरूर होगा क्योंकि अगर उन्होंने पहले ये देख लिया कि ओके ठीक है हमारा तो ये प्लान काम नहीं किया, they will come back again with a new plan. But we need to be strong enough कि no matter how many times these spirits come against us, we should know what to do. Yes. Right? बने Hallelujah. So आइए हम सब दुआ करते हैं. इसके बाद मैं आज के इस कलाम का इख्तिताम करता हूँ. Next time we will talk about the second part कि how we can recognize these spirits, और next time हम इसके और advanced levels को देखेंगे. And I believe कि ये बहुत से लोगों के लिए this is a new thing today, but this is not something कि जो out of the Bible, it's written in the Bible. I'm just putting some words to it, right? So these spirits were there. I'm just putting monitoring in front of that spirit. ये निगरानी रूहें या जो forces of darkness, you know. चले आए हम सब दुआ करते हैं. Hallelujah.